From today, we will discuss the previous GMAN problems in January shift and April shift problems. So today I'll take one problem from that. This is a question from April. So here it's a problem from limits, but little bit basic knowledge is required. The problem is actually the simple one. Limit is very simple, but whereas graph knowledge, or you should know the modulus function. So here the function is defined as f of x is equal to 5 minus modulus of x minus 2. एक function दिया गया है f of x, and the second function given g of x is equal to modulus of x plus 1. So here he said that f of x attains maximum value at alpha. So this function f of x attains maximum value at alpha, and the second function g of x attains minimum value at beta. So first the thing is, you have to find out actually what is alpha, what is beta first. Then we can go how to find out limit. ओके पहले हम ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बारे में बात करेंगे. सो जनरली क्या होते हैं, इफ आई टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, सो हाउ द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स लुक्स लाइक. So if you see the graph of mod x, this is the graph of mod x function. So here you can see this is the modulus of x. Now you can see that the mod x function, the modulus function takes minimum value here and it goes up, here also it goes. So here we have the minimum value. Where it takes minimum value is the important thing. Where it takes the minimum value at x is equal to 0. At x is equal to 0, it takes the minimum value. So how to know for this? For example, if I say f of x is equal to modulus of x minus 2, how the graph looks like? F of x is equal to modulus of x minus 2. Now, where it takes the value 0, means whenever you substitute x value 2 here, it will become 0. Means it meets x-axis at 2. So like this. So modulus function is always in the shape of v, going upwards, and it meets x-axis at some particular point. At x is equal to 2, it meets x-axis. Now, if you want to draw the graph of minus mod x, so minus mod x is what? The function values of minus mod x are opposite to the function values of mod x. Means if mod x is positive, then minus mod x will be negative. So therefore the graph of minus mod x is this. Means you can say roughly it opens downwards. So if mod x having a plus symbol, it open upwards. If modulus having minus symbol, it open downwards. So what is the meaning of open downwards? There is, you can see a maximum value here. There is no minimum value because it is going down. In going up, whenever it goes up, there is no maximum value. There is no maximum value, but has minimum value at this point. You can see here we have minimum value at this point, but here no minimum value, maximum value. So whenever modulus function has a negative symbol, it has what? Maximum value. And whenever the modulus function with the plus symbol, it has minimum value. So based on this basic knowledge, now he is asking this question. So now we will see how to solve this limit problem. So to solve this limit problem, first we need to find out what is alpha and what is beta. So what is alpha here? Can you see what is alpha? How he defined alpha? Alpha is maximum value at which this f of x is equal to 5 minus modulus of x minus 2 takes. So here you can see the modulus of x minus 2 is having negative symbol. So therefore it will have maximum value. So where it will have the maximum value, where this modulus becomes 0, means whenever this x minus 2 becomes 0, it takes its maximum value. Means x minus 2 is equal to 0, it takes its maximum value. Means if x is equal to 2, it takes its maximum value. So what is alpha value here? What is alpha?
वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। एफ ऑफ एक्स जहाँ मैक्सिमम वैल्यू लेता है वो अल्फा है। एफ ऑफ एक्स कहाँ लेता है मैक्सिमम वैल्यू? 2 पे लेता है। सो देयरफॉर वी कैन से हियर अल्फा वैल्यू इज 2. Sorry. So alpha value I got. Now here what we have to do, we have to find out the beta value. Now you see beta is what? Where g of x attains minimum value. So here g of x is equals to modulus of x plus 1. So now you can observe that this modulus function is having a positive symbol. So if it has a positive symbol means the graph is going upwards. So you can see the graph is moves like this at minus 1 it meets x-axis. So means it has a minimum value. Where it will take minimum value? माइनस वन पे ये मिनिमम वैल्यू लेता है. कितना? माइनस वन आप डालेंगे इसमें x की जगह, माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा. So here g of x takes minimum value at minus 1. So that is what is saying in the problem beta. So now we will take beta value is how much? Minus 1. So I got alpha value, I got beta value, and in the limit problem we can see that minus alpha beta. So what is minus alpha beta? Minus alpha beta is 2 into minus 1 into minus. So that is plus 2. Okay, now you see we got alpha into beta value. What is minus alpha into beta value we got? Is plus 2. So in place of that alpha into beta, we are going to replace this value and we could find this limit easily. Now see, the problem is like this. Limit extends to minus alpha beta. Just now we have got the value of minus alpha beta. अभी तो आया हमको कितना आया था? 2. अभी फंक्शन क्या दिया? लिमिट ऑफ विच फंक्शन वी हैव टू फाइंड आउट? x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. इसका लिमिट निकालना है. अभी इसमें हमको माइनस अल्फा बीटा दिया था, हमने उसका वैल्यू निकाला तो कितना आया था? हमको 2 आया था. अभी दिस इज व्हाट, there is a polynomial in the numerator and there is a polynomial in the denominator. So whenever there is a polynomial, what we have to do? First we have to substitute and verify. If you substitute here 2, you will get 0 by 0, which is indeterminate form. So whenever we get indeterminate form, generally what we do, we use the factorization method. So आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइजेशन करेंगे और ये पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 दोनों को फैक्टराइज करेंगे. अभी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आने वाला है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6. ओके, सो देन इफ यू टेक x कॉमन you will get x minus 3 into x minus 2. So this is the factorization of the numerator polynomial. So similarly you have to do the factorization for x square minus 6x plus 8. So what happens whenever you do factorization of both the polynomials, अभी हम वो factorization डायरेक्टली लिख लेंगे. ये समझ लेता हूँ कि मैं आपको ये factorization, you know the factorization that I am supposing here. So x square minus 5x plus 6 क्या लिखेंगे हम? x minus 3 into x minus 2. इसी तरह आपको नीचे पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका भी फैक्टरेशन करना पड़ेगा. सो आप फैक्टरेशन करने के बाद व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4. ये फैक्टरेशन करना मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ. x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4. अभी क्या हो गया? x वैल्यू 2 है तो ये x माइनस 2 जीरो होने वाला है और ये x माइनस 2 भी जीरो होने वाला है. इसकी वजह से हमको 0 by 0 आ रहा है. सो नाउ वी आर गोइंग टू कैंसिल आउट दिस फैक्टर विच इज गिविंग अस 0. नाउ you can substitute x value 2 directly in the remaining functions. So x value क्या हो गया? अभी इधर x की जगह क्या हो गया? 2 minus 1 into इधर x की जगह क्या हो गया? 2 minus 3 divided by, अभी इसकी जगह क्या लिखेंगे? x की जगह इधर 2 minus 4. So which is nothing but 1 into minus 1, that is minus 1 divided by 2 minus 4 is minus 2, which gives the answer 1 by 2. Okay, so this is the limit problem. So this is a basic limit actually. Whenever we have a polynomials and the numerator denominator both are zeros, then intermediate form आएगा जब हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं टू गेट द लिमिट वैल्यू. अब इसको चाहे तो आप लोपिता रूल और यू से एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, बट आई एम अवॉइडिंग दिस. आई एम विद द बेसिक मेथड आई डिड दिस. सो इसमें आपको क्या बात समझना है, इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और एक बार मैं रिपीट करता हूँ. दैट इज इट इज़ बेस्ड ऑन
द mod x नेचर, द बिहेवियर ऑफ mod x. सो mod x की ग्राफ कैसे रहता है आपको वो पता रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द मॉडुलस फंक्शन. सो मॉडुलस की ग्राफ कैसे रहता है, वी शेप में रहता है. और वो मिनिमम कहाँ लेता है बोले तो जब मॉड के अंदर जो भी फंक्शन आपने दिया गया है उसको ज़ीरो पकड़ेंगे जहाँ उनका मिनिमम वैल्यू मिलना है. बट वेन एवर यू हैव मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री फॉर एग्जाम्पल, ये कैसे ड्रा करेंगे हम, x इज इक्वल टू थ्री पे ये ज़ीरो हो जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा. सो एट थ्री इट मेक्स जीरो. सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू. बट वेन एवर मॉडुलस फंक्शन को नेगेटिव आता है तो उसको क्या नहीं रहता, मिनिमम नहीं रहता, क्या रहता है फिर, मैक्सिमम रहता है. वाई, क्योंकि ये माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स पावर फोर की ग्राफ नीचे तरफ रहता है. सो यू कैन सी दैट मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस फोर. नाउ आप क्या करना है, एक्स प्लस फोर को जीरो डालना है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फोर. सो ये माइनस फोर पे मैक्सिमम वैल्यू लेता है. सो इधर माइनस फोर है सपोज करो, सो इधर माइनस फोर लिया मैंने, सो माइनस फोर पे ग्राफ ऐसा नीचे जाएगा. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स प्लस फोर गोइंग डाउनवर्ड्स कंटिन्यूसली. इसलिए क्या होगा, इधर इसको मिनिमम नहीं रहता है बट क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है. मैक्सिमम वैल्यू कितना है, जीरो है, मैक्सिमम वैल्यू जीरो है, बट वो मैक्सिमम कहाँ पे लेता है, वो माइनस फोर पे लेता है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम. सो हियर एक्चुअली इट्स अ लिमिट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द बेसिक नेचर ऑफ मॉडुलस फंक्शन. सो आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में ये बेसिक्स पता रहना चाहिए ये सॉल्व करने के लिए. सो वी विल सी अनदर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो.